Welcome back, students. So here in this video we would be seeing the various methods involved in agriculture. So do you think that growing a crop is a very easy task? I mean, a farmer just felt like, okay, let me grow crop in my field today. So he'll wake up, he'll take the seeds, he'll go to his field and scatter the seeds and the crops will be grown. Is it that much easy? No. Much hard work is needed for growing crops. A farmer does a lot of hard work for growing crops in the field. Let's see what all farmers do to grow a crop. So, for growing a crop in the field, the first thing a farmer does is he prepares the soil of his field by plowing. वो अपनी फील्ड की, अपने खेत की मिट्टी को पहले रेडी करता है. कैसे रेडी करता है? बाय प्लोइंग. प्लोइंग मतलब जोतना, एंड इट इज डन बाय प्लो. प्लो मीन्स हल. सो हल जोतना, मिट्टी में हल जोता जाता है. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय प्लोइंग? प्लोइंग मीन्स डिगिंग द सॉइल अ लिटिल बिट जस्ट टू लूजन इट. मिट्टी को थोड़ा थोड़ा सा डिग करना, खोदना, ताकि वो लूज हो जाए. दिस इज व्हाट इज प्रिपेयरिंग द सॉइल. नाउ in earlier times, plowing was mostly done by bullocks. At the back of them, the plow was attached, and when the bullocks used to walk, the plow used to move and dig the soil. Nowadays, mostly we see tractors doing the plowing job in the field. So tractors, at the back of them, the plow is attached, and when the tractor runs, the plow also moves and plow the field. So preparing the soil means digging the soil with the help of a plow to loosen it. Now why we need to lose the soil? When the soil is loose, air and water can go inside the soil very well. पानी और हवा मिट्टी के अंदर बहुत अच्छे से जा सकती है, क्योंकि अगर सॉइल टाइट रहेगा तो पानी और हवा मिट्टी के अंदर नहीं जा पाएंगी अच्छे से. So to make the soil well watered and well aerated, we need to loosen it, and that is done by the method of plowing. Plowing is done by either bullocks or by tractors. Now, after preparing the soil, the farmer adds manures or fertilizers to the soil. Now, what is the need of adding manures or fertilizers? What happens when a farmer grows crops one after the other in the same field? The fertility of the soil decreases. It means जब एक फार्मर एक के बाद एक अपनी फील्ड में क्रॉप्स को ग्रो करता जाता है, तो उस सॉइल की जो उपजाऊ शक्ति है वो कम हो जाती है. एग्जाम्पल, अ फार्मर he grew paddy in the rainy season and then he harvested it. Once the paddy was harvested, he grew gram in the winter season. Then again he harvested the gram, and then again he grew some vegetables. So the farmer is growing the crops one after the other. This will decrease the fertility of the soil of its field. Now, to regain this fertility, to increase the fertility, उस soil की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाने के लिए the farmer has to add manure and fertilizers to the soil. Manure मतलब खाद. ये नेचुरल होता है. मैन्योर क्या होता है? नेचुरल खाद. केमिकल फर्टिलाइजर्स, ये केमिकल होते हैं. केमिकल फर्टिलाइजर्स जैसे कि यूरिया, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम नाइट्रेट. तो या तो आप मैन्योर ऐड कर लो या फिर केमिकल फर्टिलाइजर्स टू इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल. देन द फार्मर सो द सीड्स. वो फिर सीड्स को या बीज को बोते हैं. Now it does not mean कि आप कोई भी seeds को sow कर जाओ. You have to be very particular about the quality of the seeds. You always have to select the good quality seeds and sow it in the field. Now sowing of seeds can also be done by two ways, या तो manually या फिर using seed drillers. Seed drillers are the machines which are used to sow the seeds in the field. मैनुअली कैसे करते हैं? मैनुअली जब हम सॉइल की प्लोइंग करते हैं उस टाइम ही फार्मर क्या करता है, उसमें ग्रूव्स बना देता है मिट्टी में. ग्रूव्स एज एन ऐसे लंबे वाले गड्ढे, नाले वाले गड्ढे, नाले की तरह लंबे लंबे उसमें होल्स बना देता है, फरोज बना देता है. एंड
मैनुअली वो हाथ से सीड्स को प्रॉपर डिस्टेंस में सो करता है, एक साथ नहीं करेगा, अलग अलग करेगा। जैसे हमने देखा था डिस्पर्सल ऑफ सीड्स अलग अलग जगह पे, तो ये प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन करके मैनुअली सीड्स को उन ग्रुप्स में सो कर देता है। और अदरवाइज नाउडेज वी सी मशीन्स आर इन यूज, सो सीड ड्रिलर्स आर यूज्ड इन sowing the seeds. Then irrigation. Now the seeds have been sown, now the field needs water. So proper or regular irrigation need to be done to the field. So irrigation पहले हम कैसे करते थे, हम क्या करते थे, नदी के पानी को खेत की ओर छोड़ देते थे, right? We used to release the water of the river towards our field. Nowadays sprinklers are in trend. They use sprinklers for watering the field. Now one advantage with sprinklers is that इसमें पानी की बचत होती है. There is no water wastage. Minimum water wastage is seen by using sprinklers for watering the fields. लेकिन जब हम manually थ्रू रिवर्स या हम जब पानी देते हैं खेतों को, तो उसमें पानी का बहुत वेस्टेज होता है. कुछ पानी तो खेतों में चले जाते हैं और बहुत सा पानी ऐसी जगह चला जाता है जहां पानी की जरूरत नहीं है, और वो क्या होता है, वाटर वेस्टेज. नाउ फिफ्थ, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स एंड पेस्ट. इन द लास्ट वीडियो आई टोल्ड व्हाट आर वीड्स, द अनवांटेड प्लांट्स, एंड व्हाट आर पेस्ट, दोज एनिमल्स और इंसेक्ट्स व्हिच हार्म द क्रॉप्स. So we use weedicides and pesticides to kill the weeds and pesticides to kill the pest. After that, harvesting. Like when the crops are fully grown, जब आपकी फसल पूरी तरह ग्रो हो जाती है, it's time to cut them, it's time to harvest them. Harvesting मतलब कटाई. So we do harvesting either manually or using harvesters. हम मैनुअली, आज भी बहुत से विलेजेस में बहुत ज़्यादा इंटीरियर वाली जगह पे हार्वेस्टिंग हाथों से की जाती है, मैनुअली की जाती है. बट in the urban areas we see they use harvesters for cutting the crops. हम कोई भी चीज मैनुअली करेंगे तो उसमें ज्यादा एनर्जी भी लगेगी और ज्यादा टाइम भी लगेगा. इट टेक्स टाइम एंड एनर्जी टू डू एनीथिंग मैनुअली. whereas if we do the same thing using a machine, एनर्जी भी कम लगती है और टाइम भी सेव होता है. so generally using machines are more efficient in doing some work. Now the crops have been harvested. हमने अपने crops को काट लिया, कटाई कर ली. Now these crops need a place to be stored. अब हमें इसे कहीं store करने की जगह चाहिए, right? So that is the last step, storage. But that place should be dry, well ventilated and free from germs and pests. कैसी जगह होनी चाहिए? Dry यानी कि सूखी. वेल वेंटिलेटेड मतलब हवादार, उस जगह पे हवा आ भी सके और जा भी सके. देन इट शुड बी फ्री फ्रॉम जर्म्स एंड पेस्ट, अदरवाइज दे विल डिस्ट्रॉय द क्रॉप्स. सो यू नीड टू सेलेक्ट अ प्लेस फॉर द स्टोरेज ऑफ हार्वेस्टेड क्रॉप्स so that after that they can be sold in the market. Provided the place should be dry, well ventilated, free from germs and pests. So this is how is the journey which a crop undergoes and the farmer has to accompany it. So let's have a quick revision. First we need to prepare the soil by plowing. Plowing can be done by bullocks and tractors. After that we have to add manures or chemical fertilizers to increase the fertility of the soil. Then we sow the good quality seeds either manually or by using seed drillers. Then we water the fields using sprinklers. Then to protect the crops and fields from weeds and pests, we use weedicides and pesticides to kill them respectively. After that, when your crops are fully grown, it's time to cut them. So we do harvesting either manually or using harvesters. Now when your crops are cut, you need a place to store it so that it can be sold in the market afterwards. So you need to select a place which is dry, well ventilated, free from germs and pests. So these are the processes involved in agriculture or growing crops.
Hereby, we have completed the explanation of chapter 1. After this, I'll provide you the notes. So first PDF would be the exercise work. Choose the correct answer, match up, true, false, fill in the blanks, name the following. So by now, I believe almost everyone might have your GSE textbooks with you. So you have to do the exercise work in your textbook. No need of writing it in the rough copy now, because now you all have the textbook. So first PDF will be the exercise work. So go through the exercise. I'll solve it and I'll give it to you. You can write it down in your textbook. Afterwards, I'll give you the question answers, which has to be written in your GSE fair copy. So the sequence will be, you first have to write the keywords in your GSE fair copy, then short question answers, then long question answers, and then HOTS. But in every chapter, you have to first write the keywords. I'll give you in the PDF. You have to follow the same sequence while writing in your GSE fair copy. Till then, stay at home, stay safe, and stay happy. Thank you.